No, it is not disconnected. The Witch King has a message for you, Talion. Weigh his words carefully. This game was released in 2017, right? And the original in 2014. And Monolith has not released anything after this. Hey Ketan, good evening and welcome to the stream. So they are basically working on a single game ever since the release of this game. And let's just say इसके DLC भी आए थे. So let's imagine they started working on Wonder Woman in 2019. And I think that game was announced in 2021. I don't exactly remember. Either way, but it has been like a long time since they have released anything and they are working on Wonder Woman. तो ये एक पैटर्न है या जस्ट बिकॉज देयर इज अ पैटर्न आई एम नोटिसिंग राइट नाउ है दिवाशीष गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द स्ट्रीम कि जितने भी स्टूडियोज़ हैं वार्नर ब्रदर्स के अदर देन नेदरलैंड आई गेस दैट दे आर not releasing games in a good pace. Like they are taking more than 5 years, which is like average development time of a single AAA game right now. But let's see. Rocksteady released Batman Arkham Knight in 2015 and we just got Suicide Squad in 2024, early 2024. So it was like more than 7 years, I guess. And then let's talk about WB games, WB Montreal. जिनका जो लास्ट गेम था विच वाज बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स इन 2013. उसके बाद उन्होंने बैटमैन आर्कम या डब्ल्यू बी फेल ऑफ रियल हार्ड एंड मुझे लग रहा है मैनेजमेंट इशूज़ हैं. दैट इज़ लाइक वन ऑफ द रीजन्स. तो डब्ल्यू बी मॉन्ट्रियल ने आफ्टर आर्कम ओरिजिन्स दे वर्कड ऑन अ कैंसल्ड सुसाइड स्क्वाड गेम. उसके बाद दे डिड सम DLC वर्क फॉर बैटमैन आर्कम नाइट विच वाज इन 2016 लेट्स जस्ट से. On 2016 के बाद they released Batman Gotham Knights in 2023. So again a very huge a very huge time gap between their releases. And इसके अलावा हम बात करें जो थर्ड डेवलपमेंट टीम है WB के अंडर which is like Monolith Games, जिनका लास्ट गेम 2017 में आया था which is Shadow of Mordor. 2018 का DLC टाइम मान लेते हैं. So they are working on a Wonder Woman game ever since 2019, which they announced in 2021 or 2022. So it has been like 4 years by now, and we don't know what is the update on that game or like what is going on behind the scene. There are some big problems with WB going on now, that's for sure. नहीं यार, अगर तुम AAA गेम्स की बात करो ना, इतना टाइम नहीं लगता. और एटलीस्ट अगर टाइम लग रहा है ना, you get updates at least every year or at alternative years. You like इतना टाइम नहीं लगता genuinely. So there is something going on behind WB games. There is something going on. We don't know yet. And I mean मुझे लगता है ऐसा just a pattern I'm noticing right now, जिसके बारे में मैं अभी सोच रहा था. My teeth is... I should stop drinking energy drinks. एक ability थी ना जो मैंने unlock करी थी, which was like brutally... Either way guys, how was your day? Also I'm thinking of playing Yakuza 6 right now because I'm in not a such great mood, feeling a bit off after working so hard on the last project, the last video. So I was thinking of playing Yakuza 6 और मुझे लग रहा है Yakuza series has become my comfort gaming now, which is fine by me. Great series honestly. So would you guys will be able to join me if I like start playing Yakuza 6 today? But then again I'm thinking
will I be able to complete that game? Not 100%, but the main story and most of the side content within max 25 days or so. If I stream every day around 2 to 3 hours. अरे मैं एक्चुअली अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी तो मैं जनरली बताऊँ, अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है? तो जितने भी ऑडियंस थी ना, हम सब की जितने भी स्ट्रीमर्स हैं हमारे आईजीसी में, शुभ है, मैं हूँ और बाकी अदर स्ट्रीमर्स हैं, उन पे ऑडियंस नहीं आ रही है देखने, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने एग्ज़ाम छोड़ के आओ, बट ऐसा लाइक वो नहीं रहता ना यार, थोड़ा लाइक इंकरेजमेंट कभी कभार. फॉर एग्जाम्पल याकुजा ज़ीरो की स्ट्रीम से मेरा बहुत अच्छा वो रहा experience while streaming because I've like finally I got to meet a lot of new people, a lot of new viewers. So I'm just thinking अगर मैं याकुजा गेम खेलूँगा ना, तो I would love you guys to join me because I would love to have a conversation regarding the game. So I'm just not feeling that right now because सबके एग्जाम चल रहे हैं, so I think I should probably wait a bit. And आज की स्ट्रीम मैं randomly कर रहा हूँ. Yeah, because people make it fun and currently लोगों के एग्जाम चल रहे हैं. Honestly आज मेरा मूड थोड़ा डाउन ही है बिकॉज लाइक आई वोक अप अराउंड 8 or 9 आई गेस, 8 or 9 बिकॉज मैंने रात को कफ सिरप पिया था सोने से पहले एंड आई शुड नॉट हैव डन दैट. इट वाज लाइक वे टू पावरफुल, कुछ ज़्यादा ही नशीला था. तो लाइक आज उठते ही फिर आई स्टार्टेड एडिटिंग वीडियोस. उसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो गई. उसके बाद लाइक आई वाज स्टिल स्लीप फीलिंग क्वाइट स्लीपी, सो आई जस्ट स्लेप्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, हैड सम स्ट्रेंज ड्रीम्स. उसके बाद लाइक मेरा मूड नहीं करा कुछ करने का, सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट प्ले सम गेम्स, मे बी लेट्स स्ट्रीम. कोल्ड ठीक हो चुका है बट इट्स माई वॉइस दैट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ. इस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा करंटली एंड मुझे लगता नहीं अभी ठीक होगी मेरी वॉइस इतनी जल्दी बिकॉज लाइक द डे आफ्टर टुमारो ऑन संडे आई विल बी गोइंग फॉर अ ट्रैक इन द मॉर्निंग. सो लाइक मुझे लाइक प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है कुछ भी करने का ऑनेस्टली अदर देन वर्किंग ऑन समथिंग. आज मैं वीडियो से फ्री हुआ, मुझे कल भी वीडियो पे वर्क करना है. परसों ऑन संडे आई विल नॉट बी अवेलेबल टू डू एनीथिंग एक्चुअली बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ ट्रैक. Then I might get some time on Monday, but even then I don't think I will get that much time because your track cover video I will probably have to make that, edit that, so we can get a video for next week. So like मुझे कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल रहा है literally. उस वीडियो से मैं फ्री होऊंगा, उसके बाद मैं मोस्ट लाइकली अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करूँगा. सो लाइक नो सीरियसली आई एम लाइक वे टू बिजी this entire month. And I don't know what to do right now. Like I'm not feeling horrible, but I'm not feeling good either. Like it is one of those days. Rock. Gosh. अरे यार हैक्टिक शेड्यूल की दिक्कत नहीं है यार. लाइक करंटली बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है, करंटली बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है. और ये वो इंसान बोल रहा है जो यूजुअली जिसको दिक्कत नहीं होती काम करने में. बट आई फील लाइक आई एम अ बिट बर्नड आउट ऑन थिंग्स राइट नाउ. वैसे एक तो मेरी ये तबीयत ठीक नहीं हो रही.
Yeah, gold level अच्छा है game का. One of the most standout things, because since he Lord of the Rings universe में set है, a lot of the Rings, at least the movies, they are not that gory. They are actually quite sanitized. So like it was like a huge surprise when this game was released that Lord of the Rings is getting a lot of gore, a proper mature animated game which has. Oh, thank you. Rise, Ranger. Minas Ithil needs you. So it is actually quite strange to see Lord of the Rings and a Middle Earth property to have such amount of gore. Is he vulnerable to stealth? Gosh. I don't have any detail for him. अच्छा ये तो है, ठीक है. No, he's not vulnerable to stealth. Not a chance, Glob. अरे भाई साहब, I tried to. Miserable maggot, stop crawling around. Don't you men have spines? Get up. What happened here? Swine! अरे सारे आ गए. You from both ends, just to see if it's possible. कल मैंने सोने से पहले दूध में चाय पत्ती की जगह एक्सीडेंटली कॉफ़ी मिला थी, एंड आई एम सेंसिटिव टू कैफीन. ओके, तो क्या कल रात को सोई नहीं तुम बिल्कुल भी? What the hell? Would have reward me for this? Maybe even a promotion. फिर आज का दिन तो मैं सोच सकता हूँ कैसा क्या होगा. Also, I should probably stop drinking energy drinks. They're not good for health. I know about that. But मुझे कैफीन, जब मुझे like काम करना होता है ना late night तक or that kind of thing, I need caffeine and a good amount of it. So I should stop drinking energy drink and start drinking coffee again. I think that will be much better for me, honestly. And like next month मैं start करता हूँ थोड़ी physical activities. I should probably start doing some cardio again. That will be good for me. Gym का मैं कह नहीं सकता. Like I much prefer a gym because I can do much more than just cardio there. And like जो like वो होता है ना morning का तुम्हारा like gym time. You're listening to some good tracks, good songs while doing gym. I just love that. So I should probably do something because यहाँ मुझे दिख रहा है मैं लेजी हो रहा हूँ काफ़ी. एंड जब लाइक मेरे को जब टाइम नहीं मिलता ना कुछ करने का, आई ओनली फोकस ऑन वर्क. या मुझे पता है बॉडी को भी हार्म देते, बट इट इज़ लाइक ना वेरी चीप वे टू गेट सम एनर्जी व्हेन यू नीड इट टू डू समथिंग. तो लाइक मेरा करंट लाइफ स्टाइल इज़ नॉट गुड फॉर मी. आई शुड प्रॉब्ली डू समथिंग अबाउट इट डेफिनेटली because I can see it is very harmful for me.
अरे यार पहले आई लव टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स यार. लाइक 2 साल पहले की बात है व्हेन आई वाज डूइंग जिम रेगुलरली. आई वाज ग्रेट. I had a pretty good body. I was very active. But yeah, recently like मेरी एक्चुअली तबीयत ख़राब हो गई थी. मेरा बीपी लो हो गया था. Can you imagine a 22 years old guy getting low BP? It was most likely due to overthinking and not getting food at proper time. So उसके बाद से मैंने obviously gym छोड़ दिया था because I wasn't able to do anything. So I'm thinking like I should probably join it now. Hey football world, good evening and welcome to the stream. Immunity issue तो नहीं है and sorry to hear about that honestly Ketan. बट उस टाइम मेरा एक बार लो हो गया था. उसके बाद मैंने जिम छोड़ दिया था फिर कुछ टाइम के लिए. फिर उसके बाद मैंने वापस ज्वाइन किया लेकिन नहीं हो पाया. ना अब मुझे जिम स्टार्ट करना पड़ेगा ना. आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो विच इज़ फाइन बाय मी. आई कैन डू दैट. इट इज़ फन. जिम इज़ फन फॉर मी. अच्छा थंडर, तुमने नाम चेंज कर लिया अपने चैनल का? कोई पर्टिकुलर रीज़न या फिर दूसरा चैनल है? Where is the main story? अच्छा मीनी सेथल के अंदर है क्या? ओके, आई विल हैव टू गो देयर. और मीनी सेथल कैसे जाऊंगा मैं? ओके, फास्ट ट्राई. Yes, mobile changed. Okay, got it. New mobile, new channel. ये कौन सा लॉजिक है यार? I should probably join a gym honestly. देखते हैं. और मुझे लग रहा है like see, for last 2 years I never had an issue with girls. I still don't, but I do feel like I'm getting a bit fat. So I should maintain my body so I can get more girls. Okay, I'm not that kind of person honestly, but I feel like I have become a playboy nowadays. Not really playboy, just someone who gets a girl's attention quite easily because of how I behave. I try to be. I'm like a very gentleman kind of person. So पता नहीं इंडिया में लोग क्यों like जो टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स होते हैं ना, उनका पता नहीं नेचर आजकल कैसा है लड़कों का. लाइक मोस्ट पीपल आई नो, मोस्ट पीपल हु आर लाइक अराउंड 20-25 ट्राई टू बी लाइक दैट बैड एज गाय, पत्थर दिल इंसान. एंड दैट इज नॉट एन अट्रैक्टिव ट्रीट टू हैव ऑनेस्टली. दैट इज नॉट समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव. सो यू शुड नॉट लाइक डू दैट काइंड ऑफ थिंग. इस रीजन से लाइक सिंस आई एम सच अ जेंटलमैन, लाइक आई एम प्रीटी लकी रिगार्डिंग गर्ल्स. At least for last few years it was quite easy. तो हाँ ख़राब नहीं हुआ. देख लो इसमें HD में केवल देख लो होगी रखी हुई. तो like that kind of thing because of my nature, but I should probably maintain my body again. I used to look pretty good 2 years ago. Hey Shubh, good evening and welcome to the stream. अरे क्या हुआ, तुम स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे अभी? 2 दिन हो गए शायद तुम्हें प्रॉपर्ली स्ट्रीम करे हुए. बड़ा कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है. Human survivors are out there somewhere. We need to go and wipe them off. You're not well. Recovering phase. ध्यान रखो यार, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है.
अरे जाओ यार, आई डोंट इवन नो हाउ टू दिस। हाँ, सख्त इंसान की बात कर रही थी ना, देखो आ गया एक। आ गया एक सख्त इंसान। बाय द वे, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, जो आजकल लोग ये वाली सख्त इंसान वाली हरकतें करते हैं, इसका कोई रीज़न है क्या? लाइक जनरली जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा दिमाग चलता है, इट्स बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यू नो रिसेंटली, पता नहीं, एक्चुअली रिसेंटली हमेशा से ही है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, या सख्त इंसान वो बोलते हैं ना, लाइक पत्थर दिल, लाइक लोग वो कोशिश करते हैं लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, एंड ओपन नहीं होते लोगों से प्रॉपरली। आई थिंक उसका रीज़न ये है कि दे डोंट नो हाउ टू बिहेव अराउंड स्ट्रेंजर्स, विच इज़ वेरी नॉर्मल। सो लाइक वो अप्रोच नहीं करते हैं, उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है व्हेन दे आर मीटिंग समवन न्यू। तो लाइक इज इट बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टूवर्ड्स एन स्ट्रेंजर? इज इट बिकॉज ऑफ दैट, लाइक इसलिए लोग वो पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं अपने लिए, लाइक, और इज इट समथिंग एल्स? या दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज बहुत नॉर्मल है यार, लाइक मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। when I was an introvert, उस टाइम पे मैं लाइक पत्थर वो तो नहीं था, पत्थर दिल इंसान, सख्त लौंडा तो नहीं था मैं, बट आई वॉज क्वाइट शाई, विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, बट आई हैव ऑलवेज बीन इन द जेंटल पर्सन, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। हाँ, तो यही है, तो मैं या कवर अप काइंड ऑफ थिंग। सो इज़ इट लाइक मोस्ट पीपल इसलिए करते हैं, या फिर चाहे इज़ देयर सम अदर रीज़न? बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है, इट्स बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टूवर्ड्स अ स्ट्रेंजर, और डोंट नो हाउ टू स्ट्राइक कॉन्वर्सेशन, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लाइक मुझे भी आजकल लाइक नहीं आता हाउ टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन, आई जस्ट से रैंडम थिंग समटाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब हम वो देखने गए थे डंकी, देयर वाज अ गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड लाइक उस दिन लाइक आई डोंट नो क्या मैं ब्रेवरी आ रही थी मुझ में, आई वाज लाइक रैंडमली आस्किंग हर डिफरेंट क्वेश्चन, शी वाज लाइक या श्योर, शी वाज क्वाइट कूल ऑनेस्टली, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। prefer to be alone, so that is a phase, Ketan, you will get over it. And कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, but in my personal opinion you should. It feels good to meet people personally, like interacting with a stranger, it is fun sometimes, so do it, it will be good for you. And हाँ, मैं आज गेम खेलने ज़्यादा बात कर रहा हूँ because like I feel like talking, honestly. बात करो तुम लोगों से, conversation strike करते हैं, कुछ अच्छा सा आ जाए। दैट इज़ गुड थिंग देवाशीष। तुम्हारा जो लाइक वो फेस था ना लोगों को हर्ट करने का, वो चीज़ से दूर हो जाएगी धीरे धीरे, आई एम श्योर। लाइक बी ओपन टू पीपल, लाइक ऑफ कोर्स नॉट एवरी वन, बट एटलीस्ट बी ओपन टू दोज पीपल हु आर अराउंड यू, लाइक योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स। लाइक पता है हमारे इंडिया में क्या है, लाइक बिकॉज ऑफ और यू नो और चाइल्डहुड एंड हमारे पेरेंट्स के पेरेंटहुड की वजह से, मोस्ट पेरेंट्स के, सिंस दे आर नॉट, जो करंट पेरेंट्स हैं उनमें से बहुत से लाइक प्रीवियस जनरेशन के हैं, दे आर नॉट दैट ओपन माइंडेड और नो हाउ टू डू देयर पेरेंटहुड काइंड ऑफ थिंग्स। सो इस रीजन से उनके बच्चे उनसे ज़्यादा बात नहीं करते अबाउट देयर फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम में से कितने लोगों को ध्यान होगा व्हेन यू प्रॉपरली हग्ड योर फादर? लाइक मदर का तो नॉर्मल है, बिकॉज मदर का नेचर ऐसा होता है, यू विल बी ओपन to her, but what about your father? How open are you with your father? That kind of thing. कब properly बात करी थी, कब उन्हें hug करा था? When was the last time you said that I love you, papa? That kind of thing. Parents से तो I talk to my mom. Mom से सब बात करते हैं यार. She is going through a lot. So nowadays both of us share things. Understandable. हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ मैं, देवाशीष, यू शुड टॉक टू योर फादर। वही थी मेरे ख्याल से, और काम क्यों नहीं कर रही? HDMI चालू थी, वो इसमें लगाई थी लैपटॉप में, क्या पता।
एक ही थी, वो पुराने वाले मॉडल की थी. लास्ट टाइम मैंने बात करी थी yesterday, तो तुमने तो कहा ना तो दैट यू बी ओपन विद योर पेरेंट्स. दैट्स गुड. सैडली दिस जो ये करंटली मैं बात कर रहा हूँ, आई गॉट दिस आफ्टर माई मदर्स डेथ. सो आई विश आई हैड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, लाइक बीइंग ओपन विद बोथ ऑफ दैम, बीइंग नाइस टू दैम. ये मुझे पहले होती, बट आई थिंक दैट इज़ लाइफ. You gain experience and these kind of things, understand these kind of things after losing something. So like it's fine. It's fine. It's just one of those regrets that I will have, but I don't ponder about them that much because shit happens. Whatever happens, happens. I can't change that. So I don't have like that kind of oh shit. I was never nice to my mother. She knew I loved her. बट एक वही होता है ना, लाइक हमारे टीनेजर्स में हम कितने लाइक रिबेलियस होते हैं, वो शायद फेस सबके साथ आता है. एंड आई वॉज इन दैट फेज व्हेन वी लॉस्ट हर. तो लाइक उस टाइम पे या इट वॉज माई रिबेलियस फेज. एंड उसके बाद मुझे लाइक रियलाइज हुआ, लाइक उसके बाद मैं काफ़ी शांत हो गया, काफ़ी. आई थिंक इट मस्ट बी दैट आई एम टायर्ड ऑफ being a shy person who wasn't able to say much to my mother. तो उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हो गई है. आई थिंक आई हैव लर्नड हाउ टू बी अ गुड पर्सन. सो या आई एम ग्लैड दैट मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी एंड आई एम अ बेटर पर्सन देन हु आई वॉज बिफोर. एंड आई लाइक दिस यार. आई लाइक बीइंग अ जनरल पर्सन, like being someone who's peaceful most of the time. like मुझे अब like एक वो होता है ना तुम्हारी लाइफ में, तुम एक ऐसे थिंग से गुजरे हो कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है तुम उस कॉन्सेप्ट को समझने लग गए हो. I now understand the concept of losing someone and concept of death. I don't feel that bad about losing someone now, because recently after my mother I lost my grandfather, जिनके मैं kind of close था, not saying that close but I was close to him. उसके बाद I recently lost my uncle a few months ago, who was like very good. He was a cool dude. हम काफ़ी मज़े करते थे उनके साथ बैठ के, like तो उस टाइम I think I cried once during that time. but उसके बाद एक होता है ना, तुम्हारी realization होता है ठीक है, this kind of thing happens in your life and you can't change that. So I get over at least that very easily nowadays, because like I have understand that people are not with you. People are will never be there for you your entire life. So अगर तुम्हें कुछ करना है अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ तुम क्लोज हो, just do it. Have some good memories with them, because that is more important. Have some good time with them, spend some good time with them, be open to them, because तुम्हें फिर बाद में तो रिग्रेट नहीं होगा. आई एम वेरी ओपन टू माई फादर. उन्हें मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में पता है, उन्हें मेरी सिचुएशंस के बारे में पता है. आई टॉक टू हिम. वो मुझसे ज़्यादा नहीं करते बिकॉज ही इज़ नॉट दैट ओपन. ही इज़ लाइक फ्रॉम अ प्रीवियस जनरेशन. तो उनके पेरेंट्स ने उनसे इतनी बात नहीं करी, तो मुझसे इतनी नहीं कर पाते. बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनसे करने की. एंड वी हैव became quite close after my mother, because since वो मेरे साथ ही रहते हैं दिन भर. मेरे भाई और जो भाभी साहब हैं, they like of course my brother is married, so of course he don't have that much time for my father. तो I try to be there for him every damn time. उनकी सुनना, उन्हें मेरी बातें सुनाना, that kind of thing. So yeah, I love that. Hey Tushar, good evening and welcome to the stream. I'm good. तुम बताओ. I'll talk through once I start achieving things. I'll have the guts to talk to him properly. It is not about achieving. Like father का nature कैसा तुम्हारा towards you? Like is he like all about you achieving something? Like do you have big ambition? पार्टी करवा दो. I'm not a party guy honestly. मैं enjoy करता हूँ पार्टी करना, but I don't organize these kind of things. अगर कोई बोल देता मुझे फ्रेंड ले चल पार्टी में चलना, ठीक है चलो. I personally love disco. I love dancing. मुझे नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं आता. मेरे को रद्दी पर नाचना नहीं आता, बट हाँ नाचता हूँ, मज़ा आता है मेरे पास. Rebellious phase मेरे साथ आया ही नहीं कभी. In my case, because ever since childhood I was mature enough, I guess. That's good. I'm glad about that. I'm gladful. Sorry. I was close with my grandfather, but after his death I barely talked to anyone. That is not something you should do. मुझे पता है, like there are wounds, there are some things that you don't understand at such times.
After losing someone who's close to you, don't feel like talking to someone, but don't do that. Make it a lesson. Don't make it something that will drag you down, drag your personality down. Instead, make it something that will make you more mature about that, Ketan. Like, so try to talk to more people. Be open with them. कुछ मैसेज शो नहीं होते चैट में. सॉरी आई थिंक मैंने टॉप चैट पे कर रखा है. लेट मी चेंज इट टू ऑल लाइव चैट्स. अब हो जाएंगे शो. तो मेरी कोल्ड मेरी हालत ख़राब कर रही है. फादर की बात हो रही थी. फादर को कॉल आ गया. गिव मी मोमेंट गाइस. So, my father is a transporter. He has been working for India Gate Basmati rice ever since my birth. So, almost 24 years now. तो उनको आना जाना रहता है बाहर. So, currently वो दिल्ली में है. तो obviously दिन भर गाड़ी चला रहे थे. तो like he wasn't able to attend my call. तो उन्होंने बताया like he will be reaching home in an hour and so that kind of thing. आ जाए. Well, I talk to my old friends and there are a few college friends too. So I don't feel the need to make new friends. See, that is good thing. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स के तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा है then that's great. मेरा पता है क्या है. मेरे like 2 friends हैं जो बहुत अच्छे हैं. Like I can say they are my best friends. But recently due to some events, one of them is not talking to me because I'm honestly a bit too busy. Like he's a kind of person who loves to go outside, go somewhere, mountain trekking, that kind of thing. So उसने मुझे multiple times पूछा जाने के लिए, but due to me being busy and due to some personal reasons मैं नहीं जा पाया. So like he's not talking to me because of that. Like understandable. I can understand his perspective, but क्या कर सकते, कोई बात नहीं. थंबनेल का आइडिया कैसे नहीं लगता. मैं रैंडमली बनाया तो जो अच्छा करती है. अरे एक्चुअली चीज़ क्या है, थंबनेल मैं रिसेंटली बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग वेब कैम. पहले मैं नहीं करता था, तो मैं ऐसे पहले थंबनेल नहीं बनाता था. तब लोगों को मेरा थोपड़ा दिख रहा है ना, तो मैं थंबनेल में डाल देता हूँ. दैट इज द रीज़न. जाना कहाँ था. He's back! Scream for me! Suffer me now! क्यों तुषार, तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है? No, Shub, you keep quiet. Gosh. दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा पाता. बट यार जाना चाहिए ऑनेस्टली. इफ समवन्स आस्किंग यू दैट मेनी टाइम यू शुड प्रॉब्ली गो. बट हाँ, अगर कुछ जेन्युइन रीज़न है दैन आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, अंडरस्टैंडेबल.
अबे मेरी इच्छा कर रही है आज बात करने की, सो मैं कर रहा हूँ बिकॉज लाइक लास्ट 2 days मेरे काफ़ी रफ थे. आई फील लाइक टॉकिंग, दैट्स इट. और फिर ये गेम भी लाइक ऐसा ही है जब मैं करंटली खेल रहा हूँ. इट इज़ लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट शट योर ब्रेन डाउन एंड जस्ट एंजॉय इट, दैट काइंड ऑफ गेम. सो आई एम यूजिंग इट एज अ टूल. You seem so baffled. अरे यार ये आ गया साला. By He- Mordor's pipe. He is the nemesis In his right now. pipe. Cough. He has killed me so many times. Soft target. Fear of pinning. I don't have the ability to pin anything right now. Ah! यहाँ पर आओ तुम सारे के सारे. One hit, literally. No chance, I'm dead. Can't steal my verses now, can you, eh? एक दो दिन, एक हफ्ता लग जाएगा. सकीरो खेल लो. अगर उस गेम के मैकेनिक को नहीं समझ पाए ना, देन वो गेम तुम्हारी मार के रख देगा ढंग से. सोल सीरीज सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर लाइक आरपीजीज. निंजा गार्डन अनदर गुड गेम, इट इज़ क्वाइट टफ एज वेल. एंड अगर तुम्हें लाइक एक फन गेम चाहिए जिसके बॉस तुम्हारे मार के भी रखे बट द इंट्रैक्शंस आर फन, देन प्ले शैडो ऑफ वॉर विच आई एम प्लेइंग राइट नाउ. ब्रूटल डिफिकल्टी भी खेलना. इट इज़ मच मोर ऑफ अ बैलेंस डिफिकल्टी कंपेयर टू द ग्रेव वॉकर डिफिकल्टी. एंड इट इज़ टफ बिकॉज तुम्हारे एक्शंस की वजह से तुम्हारे बॉस काफ़ी डिफिकल्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मेरे साथ चल रहा है फिलहाल. अच्छा सकीरो खेल रखा है तुमने. नीहो इज़ गुड एज वेल. इट इज़ डिफिकल्ट एज वेल, pretty difficult actually, but the combat system is said to be good. Made by the same developers who made Ninja Gaiden, Koei Tecmo. So लो तुम्हारे लिए एक और गेम. फास्ट ट्रैवल कर लेता ना यार, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ फालतू में. मैंने अनलॉक तो कर रखे हैं फास्ट ट्रैवल पॉइंट्स. एक टावर है मैंने प्योरीफाई नहीं कर रखा. लेट्स प्योरीफाई इट. डुअल सेंस, PlayStation 5 डुअल सेंस. Purchased it about more than a year honestly. Yeah, it has been more than a year since I purchased it. Working well. बीच में कुछ इशू आए थे regarding the D-pad and the stick drift आ गई थी बेसिकली, बट वो अपने आप ठीक हो गया. करंट जनरेशन कंट्रोलर्स है तो बहुत अच्छे, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड दे सो प्रीमियम. प्रॉब्लम इज उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन. सो यू आर फेसिंग इशूज लाइक stick drift and things like this, which should not be present honestly. I'm paying 5,000 rupees for these controllers and $60. A sort of halfling that lives beyond our reckoning in the north. I wonder at the strange notion of full-grown adults who scarcely reach my waist in तो मैंने एक बार में थोड़ा परचेस किया था. After Saved some once money. in Mordor, That's it. a Do that. hobbit would be a welcome sort of strange. देखो मैंने एक चीज़ सीखी है अपने बचपन से, मेरी काफ़ी अच्छी आदत है. लाइक आई एम यूज्ड टू सेविंग मनी. सो जब मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है कि लाइक आई नीड दिस थिंग, आई वॉन्ट इट, आई जस्ट स्टार्ट सेविंग मनी फॉर इट. रिसेंटली मैंने ड्रैगन्स डॉन का परचेज किया है विच इज़ लाइक 4,500 का गेम है. मुझे पता है वो गेम आ रहा है एंड आई नीड टू प्ले इट, आई वॉन्ट इट, सो आई स्टार्टेड सेविंग मनी. बेटा इतना पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है ही नहीं एक्चुअली इतना. क्या हम नल्ला फिलहाल जो लाइक रोज़ के जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के और ये सब बचाता हूँ मैं, ठीक है. बाहर कुछ खाता नहीं जल्दी से, दैट काइंड ऑफ थिंग. Yes, I am cute. I know that. और इस चीज़ का मुझे बहुत घमंड है बिकॉज
Most people say that to me, especially girls. One of the reasons why girls are attracted to me. That is like my main trait. I'm not cool looking. I'm not badass. I'm not सख्त दिल लौंडा जो लड़कियां like मेरे पीछे मरे. But the thing I have is like I'm cute looking and I'm quite a gentle person. देखो पता है क्या है, जो मेरा ये फेज़ है करंटली रिलेशनशिप वाला, एक्चुअली वो 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग. बट इतने टाइम के अंदर लाइक आई हैड 4 to 5 गर्ल्स. लाइक ऑफ कोर्स आई वाज नॉट इन रिलेशनशिप विद एवरीवन, बट था, उनकी तरफ से था, कईयों के लिए मेरी तरफ से था. बट हाँ, रिसेंट ईयर्स में हो गया हूँ मैं. लाइक आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ गर्ल लाइक एंड व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आई पर्सनली प्रेफर. तो इस फेज से जब से मैंने जॉब ज्वाइन की थी उससे मैं समझ गया था लाइक हाउ टू अट्रैक्ट काइंड ऑफ गर्ल्स. एंड पर्सनली जो मेरा करंट जो पर्सनल ट्रेड्स हैं, जो मेरी पर्सनैलिटी, आई थिंक इट इज़ like it is not that common in India, which I honestly don't understand why. So that is like a plus point for me. I'm a sweet heart kind of guy. You know, अगर किसी लड़की को पसंद करता तो I will do a lot of things for her, things that she like writing some love letters for her, because I'm like I was at once I was like very old fashioned lover. But जो मेरी first girlfriend थी, she loved that kind of thing, you know, old fashioned love kind of thing. So I used love letter, you know, I wrote letters for her and that kind of thing. So that is my personality trait. That is my advantage. But हाँ, मुझे पता चल गया है, मेरी चॉइस काफ़ी स्पेसिफिक हो चुकी है लड़कियों के लिए. मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, शी वॉज लाइक मैच्योर. शी वॉज 25 एंड आई वॉज 22 दैन. शी वॉज लाइक फ्यू ईयर्स ओल्डर दैन मी. तो मेरी प्रेफरेंस मुझे पता चल गई व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आई लाइक. समवन हु इज मैच्योर, समवन ऑफ कोर्स आई हैव मदर इशूज़, ऑब्वियस रीजन, तुम लोगों को पता है क्यों है. तो मुझे लाइक अब ऐसी लड़कियाँ पसंद आती हैं दैट विल ट्रीट मी जेंटली एट टाइम्स. शी विल अंडरस्टैंड माई थिंग्स काइंड ऑफ थिंग एंड गाइड मी. तो या आई प्रेफर मैच्योर वुमेन्स नाउ, बिकॉज I get a bit irritated if I'm on the other side. If I'm if I'm trying to make people understand my feeling, my partner my feeling, then I can get a bit annoying and frustrating with that, because सब कुछ नहीं समझा सकता मैं, मेरे नेचर में नहीं है ये. So I prefer a motherly love kind of thing from a girl. I need a mature woman in a relationship. And हाँ, अगर हम like बात करें कि लुक्स वाइज, देन डस्की वुमेन्स हु आर स्लिम. डस्की कलर इज ब्यूटीफुल. लेट्स जस्ट से इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. क्या होगा ऋषि? रात पे बंजारा नीचे रॉकस्टार चल रही है. नादान परिंदे. वॉच दैट मूवी यू हैवंट. भाई रणबीर कपूर की बहुत सारी मूवीज़ है, यू एवरी सिंगल वन ऑफ यू शुड वॉच बिकॉज हिज एक्टिंग इज अमेजिंग. एंड रॉकस्टार, बर्फी, एनिमल, एटलीस्ट यही 3 तो देखो प्लीज़. YJHD, ये जवानी दीवानी सबने देखी है. आई प्रेफर लाइक, ठीक है, YJHD हैज़ इट्स ओन प्लेस, बट आई डोंट नो, आई जस्ट प्रेफर ZNMD, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ओवर इट. बोथ हैव द यू नो सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, फ्रेंड्स गोइंग ऑन अ ट्रिप where they like try to reconnect or understand their feeling, that kind of thing. Same kind of वो है plot line. But मुझे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा ज़्यादा पसंद है. I don't know why. नहीं, मैं मलयालम मूवीज़ नहीं देखता. मैं मेरा लाइक एंटरटेनमेंट मीडिया बहुत वो हो चुका है यार, बहुत स्पेसिफिक हो चुका है. ओनली वॉच वेरी फ्यू हॉलीवुड मूवीज़, ठीक है, वेरी फ्यू बॉलीवुड मूवीज़, एंड एक्चुअली आई वॉच वेरी फ्यू थिंग्स नाउ. लाइक मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ में सिर्फ वो देख रहा हूँ जो मैं थिएटर में जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द यूट्यूब चैनल, एंड बिकॉज दोज आर लाइक वेरी गुड मूवीज़ अदर दैन फ्यू. लाइक अभी रिसेंटली मैं जब से मैंने चैनल के लिए ज्वाइन किया है, टीम ज्वाइन की, उसके बाद से मैं लाइक मोस्ट ऑफ देम लाइक बॉलीवुड मूवीज़. जवान हो गई, अपनी डंकी हो गई,
एनिमल हो गई, टाइगर 3 बहुत गंदी मूवी थी, मत देखना, फुकरे 3 बहुत गंदी थी, वन टाइम वॉच बट वाज नॉट वर्थ. सो मैं लाइक अभी रिसेंटली तो बॉलीवुड मूवीज देख रहा हूँ, बट आई जस्ट प्रेफर वॉचिंग जापानीज मीडिया बिकॉज ऑफ देयर फिलोसॉफिकल टच टू थिंग्स. Yeah, like most Japanese things, most Japanese animes has that one philosophical touch. So I just watching Japanese media most of the time. सेकंड चैनल है मेरा गपशप विद माथुर एंड कश्यप, जिसमें मैं एडिटर इन चीफ हूँ एंड कुछ वीडियोस में अपीयर होता हूँ. सो गो चेक दैट वीडियो, चेक दैट चैनल. उसमें मेरी बहुत हालत ख़राब होती है एक्टिंग करने में, बट आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क एंड आई विल इम्प्रूव अगर उसमें कुछ कमी है तो. सो गो चेक दैट चैनल. रजनीकांत मूवी देखी थी लास्ट. आई थिंक रजनीकांत हैज़ काइंड लॉस्ट हिज टच most of the part. Like, what is the last Rajinikanth movie that actually blew people out? I won't count Robot 2. It wasn't that great. I won't count Kali or whatever that last movie is. Jailer was said to be good. Haven't watched it. Huh? रजनीकांत शायद अब नहीं पता चला रजनीकांत को what script should he use. Should accept. I don't think so. Robot 2 was like fine. I think the last proper Rajnikant movie थी that blew people out was one Robot and the other was Shivaji the Boss. Those were like the last ones. Linga, yeah, you can say that, but I don't know, yaar. I don't know. I don't think Linga was that great. और साउथ इंडियन मैं सिनेमा नहीं देख रहा फिलहाल. मैंने जो लास्ट फ्यू लाइक बड़ी साउथ इंडियन मूवीज़ थी ना, मैंने वही नहीं देखी है. लाइक आई हैवंट वॉच्ड KGF, आई हैवंट वॉच्ड अली अर्जुन की कौन सी मूवी आई थी जो जिसका सेकंड पार्ट आ रहा है, पुष्पा. ना, आई हैवंट वॉच्ड साउथ इंडियन सिनेमा. आई शुड प्रॉब्ली वॉच देम बिकॉज दे आर लाइक जो मूवीज़ इनका नाम ले रहा हूँ, दे आर लाइक एट पीक एट वॉट दे डू. They're like peak masala, they're like peak story, they're like peak characterization. I should watch them. I will someday, but I'm not watching anything right now. यार चीज़ पता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता. अब मेरे पास एक एंटरटेनमेंट मीडिया है जो मैं कंज्यूम करता हूँ द मोस्ट एंड विच आई लव, विच इज़ गेमिंग. अब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता. गेमिंग भी आजकल कितना कर रहा हूँ मैं, 2 से 3 घंटे. और मैं सिर्फ तभी गेमिंग कर रहा हूँ जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, अदरवाइज आई डोंट, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिलता. See, KGF is typical. It is typical, but the thing is, what KGF does is like it does the best. Not really the best, like one of the it does very well. That kind of thing. तो KGF is like peak masala kind of thing. तो तुम जो expectation अगर तुम्हारी सही है that you are here for a masala movie, then you will feel like हाँ it is pretty good masala movie. Jawan was peak masala. Jawan was peak Shahrukh Khan masala, and I love that. हाईली रिकमेंड. अगर तुम लोगों ने जवान नहीं देखी है, गो वॉच इट. दो दैट वाज जवान इज काइंड ऑफ मूवी दैट यू शुड वॉच इन थिएटर्स. इट इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ मसाला मूवी जो ऑडियंस का देखने मजा आएंगे. बट जवान इज गुड. जवान इज रियली गुड. द एक्शन इज डैम गुड. द एक्शन कोरियोग्राफी इज डैम गुड. द स्टोरी, इफ यू कैन से सम प्लॉट पॉइंट्स आर अ बिट very Indian, very Bollywood-ish, but they are good. The movie makes you feel things. That is the reason why I watch it. Yeah, Jawan was great. Masala. It is the most masala movie Shah Rukh Khan has done in his entire career. It was more masala than Pathan. It is much better than Pathan. Vikram Rathod is one of the most baddest character Bollywood has gotten in few years. And I would love to have a sequel to Jawan, specifically focusing on him. Like मुझे पता है, his character arc has been kind of completed. Not entirely. If you want to make a story, if you want to make a continuation to his character, you can easily do it. Make him overcome the death of Deepika Padukone's character, the death of his wife. He can be a very deep character if you can write him well. Like he's a kind of character who can be very much like Dante from Devil May Cry, someone who keeps a mask on to fool people that he's such a chill guy, he's a cool guy. But in the end, deep down, he's a very depressed person who misses his wife very much every single day. That kind of thing. You can write a very good character, that kind of character. But Bollywood, पता नहीं क्यों like इतनी
recent Bollywood movies at least, they don't make character centric movies. अगर तुम्हारी स्टोरी वीक है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट इफ यू हैव अ गुड कैरेक्टर दैट आई रियली लाइक, that is like easy to understand, I will watch your thing. I love that kind of media. I love character based media more than story based. If you have a good plot with a good character, that is like char chand. Devil May Cry की story not good, like not good. It is very like typical. But then again, the जो rivalry है ना between Dante and Virgil, which was present in Devil May Cry 3, let's say it was one of the reasons we have the rivalry concept in video games, especially because that was like one of the few first rivalry that is so remembered in video game industry. So तो जो ओवरऑल स्टोरी है गेम की, ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट गुड, बट द कैरेक्टर ऑफ डांटे एंड वर्जिल एंड लेडी एंड द राइवलरी बिटवीन बोथ, दैट इज सो मेमोरेबल, दैट इज सो गुड, दैट इज व्हाट आई वांट. हे योशिकागे, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द स्ट्रीम. एंड योशिकागे से अच्छा है, अगर हम बात करें जोजो की, जोजो का मोस्ट बिलव्ड कैरेक्टर इज जोतारो कुजो, a character with very few words. He's inspired by Clint Eastwood from the Dollar Trilogy. अगर तुमने Dollar Trilogy नहीं देखी है, go watch it, especially if you love cowboy movies or cowboy stuff like Red Dead Redemption 2. The Dollar Trilogy is like peak spaghetti western. So जो Jotaro character है, he's inspired by the character of the Dollar Trilogy, the main character of Dollar Trilogy, which is like Clint Eastwood. He's like very stoic person who doesn't show much. But we know as audience, after you grab his character, that he does feel a lot of things, he thinks about a lot of things, but he doesn't show. So Jotaro is popular because he's badass and he's a man of few words who thinks a lot of things. He's a very suffered character, but he doesn't speak openly about that. But जो few hints होते हैं ना, जो drop करती है manga and anime about Jotaro, they are like, you can easily understand that yeah, he misses his party from part 3 every damn day. He misses all the people he lost during that time. And how do you get it? He basically has a photo about of his entire party around his deck, and he watches it every damn time. And audience, like, you can easily see it and understand how is he feeling and how much the loss of the people he loved is still there. It still lingers beneath everything. चैनल का ट्रेलर दे दिया बट लिंक नहीं यार, जस्ट सर्च इट, गपशप विद माथुर एंड कश्यप, वो टॉप पे आ जाएगा. इट हैज़ अराउंड 600 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ. वी आर ग्रोइंग प्रीटी वेल, आई एम ग्लैड अबाउट दैट. Devil May Cry is a goofy series. Don't expect a serious story from Devil May Cry, but if you start understanding the small details regarding the characters, then you will love it. Dante is one of my favorite characters. Devil May Cry 3 in general is one of my favorite games because it was the reason why I love gaming so much, especially Japanese games. It was the game that made me, yeah, this is cool. Yeah, I would love to be a game developer and develop things like this. बॉलीवुड मुझे इतना पसंद नहीं है बिकॉज हमारे पास बॉलीवुड में बहुत सारे ग्रेट कैरेक्टर्स हैं, बट बॉलीवुड हैज़ बीन स्टैगनेटेड सिंस अर्ली 2000s. वी डोंट टेल that many unique stories. Bollywood is very much full of masala now. Bollywood is very safe. Bollywood is trendy. It focuses on trend. One of the reasons why I don't love Bollywood that much, I don't watch Bollywood movies that much. But जो मैं देखता हूँ recently, because of my team, because of my other channel, I'm enjoying Bollywood, and there are a lot of Bollywood movies I have missed for obvious reasons. I wasn't interested in Bollywood that much. मेरी upbringing Hollywood से है यार. My father used to watch a lot of Hollywood movies, especially we talk about. मैंने Evil Dead अपने बचपन में देखी है. Things like I should not have watched, I used to watch with my parents when I was a kid. But हाँ, of course जो वर्जन देखे हमने, it was like very sanitized version जो हमें DVD and CDs में मिलता था. Evil Dead is one of my childhood movies. I used to watch those movies a lot because they were fun, especially Evil Dead 2 and Army of Darkness. They are great movies. So मेरा like childhood ऐसा ही रहा है. I used to watch a lot of superhero movies, a lot of action movies. तो मेरा वहीं पर ही है यार. Like I prefer that. I prefer media that is more character centric more than story centric. I do love a good story, that is not a problem, but if your media, if your project, if your story is much more character centric, I will much prefer that. Yakuza, a great example. एक सीरीज जो मैं continuously खेल रहा हूँ, I'm loving it. It is currently my favorite series. Stories are not good. Some of them are,
Yakuza 1 has a good story, but it hasn't aged well, personally, because I recently played Kiwami 1 and I didn't feel much. Yakuza 2 has a great story. Yakuza 3 has a story that is pretty much character centric. The entire series does one thing very well regarding its plot and story element, which is character. Most of the Yakuza protagonists are really lovable. That is why I love the character of Kazuma Kiryu, not because of the story. Story is just a part of it. They are there to bring all of these characters together, and I love these characters. That is the reason why I don't criticize Yakuza games on their story for most of the time, because I'm there for the character and I'm enjoying the character. I'm getting that character centric story. बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ आज. अरे थैंक यू शुभ, थैंक यू. सॉरी मैं तुम्हें काम करवा रहा हूँ एंड सॉरी मैं चैट नहीं पढ़ रहा. अरे मुझे आलस नहीं आ रहा है. आई एम नॉट फीलिंग. आई जस्ट वांट टू टॉक टुडे. जंगल में कांड हो गया. दैट वाज वन ऑफ द लास्ट वीडियोस आई गेस. कैरी ऑन. अब मैं भूल गया मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था. आई मुझे पता मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, बस इतना ही था. इतना ही बात कर सकते हो कैरेक्टर सेंट्रिक थिंग पे. ओके ठीक है, अगर तुम्हें सुनना ही था तो सुनो. तो मैं रिसेंटली बर्जर्क पढ़ रहा हूँ. बर्जर्क इज अ मांगा दैट इज़ लाइक फुल ऑफ एवरीथिंग. इट हैज़ a good plot, very good lore, but most importantly, the characters are like the shining beacon of that manga. The character of Griffith, the character of Guts, they are like very complex, honestly. Guts का इतना नहीं है, but if you talk about Griffith, he's such a complex character. Like वो कहते हैं ना, like Griffith did nothing wrong. There is a reason behind why people talk about it. He did a lot of wrong things. He is wrong. He's a bad guy. Let's just say he is a bad guy, but you can understand his motivations. Griffith का character हमेशा से same था. He didn't change after becoming a member of God Hand. He was always that person. But उस time पे during the golden age it wasn't that open. It wasn't that clear because of course he acted much like a human during that time, more than a demon. He's a demon right now, of course. So Griffith ka character was like, he was always a pursuer of dream, and उस dream को pursue करने के लिए, उस dream को achieve करने के लिए वो हर कुछ sacrifice करने के लिए तैयार है. That is his entire character and he never change. वो golden age के शुरुआत में भी ऐसा था. He can sacrifice everyone to achieve his dream, and he did. He literally sacrificed his entire. जिसने बर्जर्क नहीं पढ़ी है, I'm sorry about that, but it is not really that huge of a spoiler. It is like present everywhere. It is like I'm talking about the first proper arc of Berserk, so it's not that huge of a spoiler. प्लाज्मा तुम नहीं समझोगे. तो बेसिकली गट्स वाज ऑलवेज अ बैड गाय, बट जिस हिसाब से प्रेजेंट किया था मुराय ने, ही लाइक we still appreciate that character despite his bad things, despite everything. But when he changed into Famto, that I think that is the name of his demon form, like we saw all of the things he did. People changed on him. People was like, yeah, he's a bad guy, but he was always a bad guy. Like it wasn't that present during that time. But अगर तुम manga को properly पढ़ोगे, there are some few chapters about him and how he is a pursuer who can sacrifice everything regarding that kind of thing. तो मुझे हाँ ठीक है, मैं properly explain नहीं कर रहा हूँ because I'm currently reading that manga. I'm not that into it deeply. तो like you should read Berserk. Berserk is a thing that everyone should experience at least once. चाहे तुम उसे anime देखो, 97 anime, something I personally recommend, या तुम the Golden Age movie trilogy देखो, but read Berserk. It has everything, yeah. It has good story. It has very well written character. About character, Guts, he is a suffered person. He is the most suffered character in media, I guess. He is the most suffered character in any media. लोग कहते हैं that Ellie from Last of Us is most suffered character. No, she isn't. Go read Berserk. Like Guts has gone through shit. He has gone through hell.
and despite everything he's still going because of his rage, because of love for Casca, because he wants to make her what she was. And that is so commendable. That is so good. He's a character who has been going through shit every single day of his life, and he's someone who grew. Berserk was a very angry person because of what happened in his childhood. He's someone who was like very very much not a social person at all. उसे लोगों का touch पसंद नहीं था. उसे लोग पसंद नहीं है अपने around because of what happened to him. He's afraid of losing everyone. He's afraid of making connections because he know if you're close to him, you will lose your life. One of the reasons why he's such a asshole in the starting few volumes of Berserk, starting few arcs of Berserk. He's an asshole to everyone because he's afraid of making connections. He's afraid of getting attached to people. And that is so well written. It is so well written. It is mesmerizing, yaar. It is such an epic. It is like, oh, what have I watched? What have I read? It is so good. It is that kind of thing. Go and read Berserk. Berserk is good. Berserk is really good. I love the character of Guts. He has grown so much in other arcs. Like, first of all, he starts as a child. Then, because of his life experiences, he starts despising making connection to people. But he grows because of Griffith, because of the Band of the Hawk, because of Casca. He starts liking people again. He starts making a connection again. He starts enjoying people's company. But at the end of Golden Age, everything gets fucked up. Every progress he made in that specific period of his life get undoed, and he becomes even bigger asshole than he was before. But he learns again because of the party he makes. Learning those things about life, learning how to live with people, learning how to love people despite their weaknesses, despite their flaws. That is important in life. Start loving people. Start loving who are close to you. Stop acting like an asshole. It is not good. It is in phase. It will go away. But the people you have lost, they will never come back. Spend time with people who are close to you, who means to you. Stop doing that. It is important in life. मुझे पता है जो लाइक हमारी लाइफ का एक फेज़ होता है, इट विल ऑलवेज बी देयर. जो तुम्हारा क्लोजनेस है, इट विल ऑलवेज बी देयर, स्पेशली फॉर इंडियंस, बिकॉज हमारा नेचर ऐसा ही है, हमारी अपब्रिंगिंग थोड़ी ऐसी ही है, बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ पेरेंट्स वी हैव स्पेशली. और जो फ्यूचर जनरेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल अस as a person will be much more open with our kids, much more open with people, because we understand what happened with our parents. Something that is a problem. There is something wrong with our parents because उनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था. उनका चाइल्डहुड उनके पेरेंट्स की वजह से इतने ओपन नहीं है वो हमारे साथ. बट वी कैन understand that thing and not make the same mistake with our or kids. Learn from life. Shadow of Mordor देखने आया था. मैं गेम खेलने के लिए हूँ ही नहीं यहाँ पे आज. मेरा मूड है ही नहीं गेम खेलने का. स्ट्रीम के स्टार्टिंग में कह दिया था मैंने. आई जस्ट वांटेड टू टॉक. मुझे ये चीज़ बात करना अच्छा लगता है बिकॉज आई मोस्ट लाइक जो मेरे करंटली क्लोज हैं, दे आर लाइक वेरी अफ्रेड ऑफ डूइंग दीज काइंड ऑफ टॉक्स. मेरे फादर आफ्टर लूजिंग माई मदर, ही इज़ वेरी लाइक ब्रोकन. ही इज़ अ ब्रोकन पर्सन, लेट्स जस्ट से. वो अब नहीं संभाल पाते उनको, तो मुझे ये करना पड़ता है. अब मैं ओपन हो चुका इन चीज़ों के लिए, सो आई जस्ट लव टॉकिंग अबाउट दैम. बट स्टिल people like my brother, he's not that open with me. It's a different nature. I won't blame him for that. So YouTube is the only place I talk about these things. I don't talk about these kind of things with random people, of course, and I don't have that many people in my life currently. So after losing my mother, after my first breakup with the person whom I really loved, and I will always appreciate that person, and I have moved on from that, but appreciation and moving on are two different things. I will always appreciate that person. Okay, don't comment में ऐसी बातें मत देना that ओहो प्यार का हमारा क्या बोलते हैं उसको निब्बा, ओए
moved on. But I will always appreciate every single person in my life who taught me something. I will always appreciate my first girlfriend because she taught me how to handle a relationship and how to handle girls. I appreciate that. Okay, so please start appreciating people who are important for you, who have taught you something. चाहे वो कुछ भी हो. There will be some people in your life जो सबकी में होते हैं जो एक टाइम पे तुम्हारे साथ बहुत क्लोज थे, but due to certain reasons they are not there anymore. But that doesn't mean you will hate them. Hate is something that will always consume you. It will not provide you any advantage. अगर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है किसी पर्सन के साथ that you have started hating him or her, analyze that situation why you hate and her, and analyze that reason why you started hating him, her, they, whatever. That is important. जब तक तुम एक इंट्रोस्पेक्टिव नहीं करोगे अपनी लाइफ के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हुआ है, तब तक तुम नहीं उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. For example, a person like Shubh, he's not that open because of his childhood. Won't say what it is. It is upon him if you wanna say or not. But because of his childhood, he's not very much open. उसके life में कुछ traumas हैं that he himself does not understand, and he knows there is something with me that I'm not doing. He पता है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ and क्या गलत कर रहा हूँ, but he just doesn't do it, which is understandable. Not everyone can move on from their trauma that easily. मुझे मोटिवेशनल चैनल खोल लेना चाहिए मुझे लग रहा है. But honestly, I'm not that mature either. Not every single can be mature about everything. That is like a very basic thing that everyone should understand in life. If you try to be a perfectionist, you can't. अगर तुम बन रहे हो, then it will be after a lot of time. Like life में तुम्हारे साथ इतनी चीज़ें हो जाएगी, then you might become a perfectionist. But don't try to be perfection. You get it. Don't try to be perfect for anyone. You can't be perfect. It can only happen after so much experiences in your life. But still, learn from your mistakes. That is the most important thing. Please do that for yourself, if not for any other. Because अगर तुम अपनी गलतियों सीखोगे ना, you will just do better in life overall. Expressing love is not necessary in my opinion. My mother knows I love her and she shows I love her. End of story. No, it is. यार ये तुम्हारा perspective है, but personally expressing love is important. Yeah, like easily one of the biggest problem in current youth of India. They don't express love especially to their parents. Because ठीक है, parents का nature ऐसा हो सकता है because of their upbringing, but तुम ये चीज़ समझ सकते हो यार. You can understand these things, so please try to change it. नहीं हो जाएगा. मैं कोई चैनल नहीं बना लग मेरे करंट चैनल को ग्रो कराओ, मेरे को पैसे कमाओ थोड़े, ठीक है. यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हुए वॉच टाइम की वजह से. सारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा. मेरे को ज़रूरत है पैसे की, हूँ मैं लालची पैसों के लिए. बट हाँ, लाइक एवरीवन नीड्स मनी ऑनेस्टली. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट बिकॉज आई लव मनी, बट बिकॉज जो चीज़ें मुझे पसंद है उसको करने के लिए मुझे पैसा चाहिए. एक तो वो होता है लव फॉर मनी, लाइक तुम्हारा गोल कुछ नहीं है, बस तुम्हें पैसा चाहिए. आई डोंट हैव दैट. अगर मुझे मेरी जो वो है ना, जो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरी ड्रीम्स है, वो फुलफिल हो जाए ना बिना मनी के, आई डोंट नीड मनी. आई डोंट नीड एनीथिंग. आई डोंट हैव मनी करंटली, बट आई एम स्टिल हैप्पी ना. जस्ट मेरी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए. बट उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए मनी इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग. दैट इज़ लाइक नेसेसरी. दैट इज़ वाई आई नीड मनी. सो गिव मी सम मनी. लड़की जैसी फीलिंग होती है. ओए वो सेक्सिस्ट. वो सेक्सिस्ट. लड़के ऐसे ही हैं, क्या करूँ. जीन्स हैं तुम्हारे ऐसे. जीन्स से नहीं है मतलब ये. आई थिंक जो तुम्हारे लाइक पेरेंट्स थे उनका चाइल्डहुड थोड़ा ऐसा ही था, तो उनका नेचर ऐसा है, तो तुम्हारा चाइल्डहुड वैसा रह गया.
फाइटर का रिव्यू देखा, कैसा लगा? I don't have money. What do you mean you don't have money? I don't have money. Simple as that. Hey Variety, hey Shri, good evening and welcome to stream my guy. मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? From Bollywood to berserk to love to feeling, it is normal. That is what life is. मेरी स्ट्रीम में मोस्टली ऐसा होता है, जिस दिन मैं बात करने बैठ गया ना तो ऐसा ही होता है. टॉपिक विल चेंज. कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम. तो मेरी स्ट्रीम पे ऐसा ही होता है हमेशा, जिस दिन अगर मैं बात करने के मूड में होता हूँ ना, तो वहाँ जो बात करने की मूड में. एंड I'm glad I did. I'm glad that I did this stream, not to play games but to talk, because मुझे अच्छा फील हो रहा है. जब स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी, I was very dull. I was like very I'm not feeling hurt. I'm not feeling anything. And now look at me. I love talking. Either way, मैंने बहुत बात कर ली. Sherlock stream देख रहे हैं. Please have some conversation. I would love to read them. Talk about anything. Talk about anything. कोई restriction नहीं है. और मुझे अपना गेट बंद कर लेना चाहिए बिकॉज पीछे से बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू गेट अ कॉपीराइटेड. प्रेम रतन धन चल रहा है. प्रेम रतन धन वाज अ मूवी दैट आई वॉच्ड इन थिएटर एंड आई लव्ड इट. डू वॉट एवर यू वांट अबाउट इट. डू वॉट एवर यू वांट टू डू अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन. So about Prem Ratan Dhanpayo, I watched it with my cousin and her mother. His mother, sorry. And I don't know, I personally enjoyed that movie a lot. Like वो था ना, it is like, it has such a, 90s, it has such a 90s Salman Khan vibe to it because it is made by the same production house that has made a lot of his movies. Like movies के नाम मेरे को ध्यान नहीं, I'm sorry. So like yeah, it has I liked Prem Ratan Dhanpayo. I know it has its flaws. It is not a good movie even, I will say that, but I liked it during that time at least. Recently I haven't watched it because of course I don't have it that much. चैट मिस, कौन सी चैट मिस? सॉरी. अरे मैंने पढ़ लिया कि मैं सारी चैट वो नहीं पढ़ता. हाँ तो पढ़ तो ली तुमने. लास्ट चैट तुम्हारी थी, मेरे खानदान में सारे ऐसे हैं. The doubt I have in my mind is, do I have a lot to go when it comes to these things? I am a try hard. मेरे को academic portfolio से सही रखना है. I still feel quite low about this part. देखो यार देखो देवाशीष, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, like of course I haven't met you as a person, but जितने इंट्रैक्शन हुए ना अभी तक हमारी स्ट्रीम्स पर मेरे, तुम मेहनत कर रहे हो. दैट इज़ नॉट द रीज़न. तुम मेहनत कर रहे हो एंड तुमने खुद ने कहा दैट यू वर प्रीटी गुड एट योर स्टडीज़. तो यू डूइंग इट यार. डोंट बी दैट हार्श टू योर सेल्फ दैट यू स्टिल फील बैड अबाउट इट. तुम पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी अबाउट बीइंग गुड एट योर स्टडीज़, बीइंग एज गुड एज यू वर बिफोर. तो प्लीज़ डोंट hate yourself, don't hurt yourself thinking about this thing that I need to do this, I need to be better. That can be good for someone, but overdoing it will make you feel low. That is like obvious. You can't go on. You can't like continuously hate yourself. It will make you feel shitty, and if you feel shitty, you won't be able to do anything properly. It has its flaws. किसकी बात कर रहे हो ऋषि? Great movie. Fighter was good. Fighter was like one thing I really love about Fighter, it was like apologetic regarding its subject matter. Like that movie, sad, fuck P. I won't say that P is. जिन लोगों ने Fighter देखी है वो समझ जाएंगे अपने आप. So I love that how savage the movie was regarding that particular subject matter, because that entire movie depend upon that. Also, it was something different in Indian cinema. Bollywood cinema, sorry, not Indian cinema. Indian cinema is much better than Bollywood. Go watch some Gujarati and Malayalam movies. There are some, like Malayalam movies are peak.
जहाँ तक मुझे पता है. आई पर्सनली हैवंट वॉच देम, बट जितने भी लोग देखते हैं दे से दैट दे आर पीक. जो मेरे टीम मेंबर हैं गपशप वाले चैनल के, आलिक माथुर, ही वॉचेज many Malayalam movies and he says that they are peak at their storytelling and characterization. So go watch Malayalam movies if you are interested in that. So for whatever Fighter was, it was very good. It was an experiment in Bollywood and it was good. The CGI was good. The movie was very badass. The movie used its sexuality in a very good way. Jo, like, yeah, it chose those actors for a reason. It played very well with its sex appeal and I loved that. Okay, Hrithik Roshan is beautiful. I really appreciate that guy. Not in that way, I don't want to get fucked by him, but I appreciate him. Like, he's kind of guy, like, uske liye appreciation nikal jayegi. Look at that body. Look at some of his performances. I appreciate good looking people. He don't need pampering. About what? It has flaws, but despite the flaws, I love Dragon's Dogma. Yes, I love Dragon's Dogma despite its flaws. कभी कभार मुझे भी लगता है, like कभी कभार I get bored playing that game, but despite everything I still love it. यार ऐसी बिना रीज़न के मैंने उस गेम में 200 घंटे नहीं डाल दिए यार. इतना टाइम मैं याकुजा गेम्स में नहीं डालता. Despite loving them so much. I usually feel to draw the line between overdoing it and doing it. Like for me, if I get lazy and that makes me angry enough apart from it. यार देखो यार, laziness is normal. You can be lazy for things. मैं बोल रहा हूँ मैं lazy हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है. बट ये थोड़ी ना मैं सच में lazy हो रहा हूँ यार. I'm doing at least something. मैं lazy हो रहा हूँ, but in my overall life मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ. I'm not focusing on my body, but at least I'm doing something else. मैं फोकस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ अपनी एडिटिंग इन चीज़ों के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट में. सो अगर तुम सोचो दैट यू आर गेटिंग लेजी, डोंट थिंक इट यार. तुम अपनी स्टडीज़ में ध्यान दे रहे हो. चुप होने के लिए कितने पैसे लूँगा यार? 10 लाख दे दे, काफ़ी है. करोड़ों नहीं बोलूँगा मैं, तो दे भी नहीं हूँ. 10 लाख दे दे, काफ़ी है. 10 लाख में बहुत कुछ कर लूँगा. 10 लाख में सच में बहुत कुछ कर लूँगा. मेरा कोर्स की पूरी फीस चल जाएगी. आई विल प्रॉब्ली परचेज अ न्यू हाउस. आई विल गेट सेटल्ड इन 10 lakhs. दे दे. हाँ, योशिका की मेरे पास सेकंड चैनल है. इट इज़ एक्चुअली मोर ऑफ ए टीम कोलैबोरेशन जिसमें मैं एडिटर हूँ एंड कभी कभार वीडियो में अपीयर होता हूँ. द नेम इज़ गपशप with Mathur and Kashyap. Let me just tag that channel in the chat. Thank you for Shubh for providing the link, because I'm way too lazy to provide the link. और मुझे मिल नहीं रहा वो. हाँ, ये रहा. मैंने पिन कर दिया. अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो चेक करने में, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट. मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ. हाउ टू लिव अ सिंपल लाइफ डिपेंड करता है. What are your expectations from life? Depends upon that. बचपन से देखता आ रहा हूँ. आई वॉच दी 2000s मसाला मूवीज टू द न्यू मीन्स विच पीपल अप्रिशिएट. तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है देवाशीष मलयालम मूवीज पे, सिंस यू हैव वॉच सो मैनी? या आई हैव पुट 200 hours in Dragon's Dogma. मोर देन दैट ऑनेस्टली. 170 तो उसमें ये स्ट्रीम वर्जन में, उससे पहले से खेलता आ रहा हूँ वो. They don't just need appreciation, they need more recognition. Yeah, agreed. One of the best actors in India. Hrithik Roshan is one of the best actors in India and he's one of the hottest guy in the entire world. हाँ, शुभ पैसे देगा तो चुप हो जाऊंगा. मैं स्ट्रीम एंड कर दूंगा. हाथों स्ट्रीम एंड कर दूंगा. 10 लाख रुपये एंड कर दे मुझे. आज जयपुर किसने बोला? देवाशीष वाज लाइक, हो सकता है तो मुझे भी पैसे मिलेंगे. 10 लाख सेटअप, स्टार्टअप, न्यू हाउस. मुझे करना नहीं स्टार्टअप. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप. अरे मैं करंटली स्टूडेंट हूँ यार. लाइक मेरे कह रहा हूँ ना, मेरे गोल्स इतने बड़े नहीं है. व्हाट माई गोल्स आर, आई वांट टू वर्क इन वीडियो गेम इंडस्ट्री एंड हैव अ डिसेंट लाइफ.
आई थिंक मेरे एम्बिशंस इतने ज़्यादा नहीं हैं. आई डोंट हैव ह्यूज एम्बिशंस विद लाइफ. आई जस्ट वांट टू लिव द अमेरिकन ड्रीम, having a good house, a good wife, good and loving wife, having a vehicle, have a car, that kind of thing. Ambition मेरे उसमें है. After becoming a game developer, I want to make a game that I want to play the most. That is what something I want to do. I mean, जो मेरा dream project होगा ना, that is what I want to make. Half-Life games are great, and that's okay. You're just not in a good mood right now. They focus on realism like the 18th century novels. सबको appreciate करना नहीं होगा. Who are away from their homeland gives a sense of relatability. I should watch some Malayalam movies honestly. But then again मैं ये बात बोलते रहता हूँ ना, जो देखना तो बहुत कुछ है but टाइम नहीं मिलता. What is good for you यार, like what is good and decent for you, कह रहा हूँ ना, like depends upon your goal, depends upon what you want out of your life. I think मेरा childhood थोड़ा ऐसा ही था कि मेरे ambitions थोड़े कम है regarding life. I don't want to become a millionaire. I don't want to have chicks around me. I just want someone who genuinely loves me, someone whom I genuinely love. I just want a good house and provide normal basic things in life. Like मुझे जो बेसिक थिंग्स है लाइफ की, रोटी कपड़ा और मकान, उनके लिए मेरे को सफ़र ना करना पड़े. दैट इज़ व्हाट आई वांट. एंड जहाँ तक मेरी वर्क लाइफ की बात करिए, आई विल बी ग्रेट. मैंने फील्ड ऐसी चूज़ करी दैट आई लव, एंड या आई एम फाइन विद दैट. आई डोंट हैव दैट ह्यूज ऑफ अ थिंग. मेरा एक प्रॉपर ड्रीम है नाउ, विच इज़ लाइक टू मेक माई ड्रीम गेम समथिंग आई वॉन्ट टू मेक, एंड दैट्स इट. शुभ कह रहा हो ना, एक्सपेक्टेशंस से पे डिपेंड करता तुम्हारे लिए शायद 100 करोड़ होंगे, बट मेरी लाइफ की एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है. पता है मेरा जो ड्रीम है, ये सब मैं बता रहा हूँ, मेरा अमेरिकन ड्रीम पता है कितने में हो जाएगा? 1 करोड़ मैक्सिमम. भाई आप 1 करोड़ भी ज़्यादा बता रहा हूँ आई थिंक मैं. बट हाँ, अभी मुझे पता नहीं है करंटली इंडिया में हाउसेस की प्राइस क्या है एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. दे आर एक्सपेंसिव. तो लाइक 1 करोड़ मैक्सिमम, दैट विल बी लाइक everything I want. A great house, 50 lakhs, I think that is enough for that. A great house, a very great house actually. 50 lakh is good. ठीक है, तो a great house. जहाँ तक लवेबल पर्सन की बात करें, वो तो तुम पर है. वो तुम पर है चूज़ करना, वो तो तुम ही चूज़ करोगे, तुम ही बनाओगे. ठीक है. About a vehicle that cost around 10 lakh rupees is enough. There are a lot of great vehicles under 5 lakhs actually. और क्या बचा यार? तुम लोगों को क्यों लगता है 1 करोड़ में घर भी नहीं आएगा? तुम क्या वो खरीदना चाह रहे हो, या कोई लाइक बंगलो बड़ा सारा? तुम्हारे लिए घर की डेफिनेशन अलग होगी. अगेन एक्सपेक्टेशंस. 50 lakhs में आई एम श्योर आई कैन परचेज अ डैम गुड होम. I love massive films though. In his 70s he still भाई माउंटी की क्या बात करूँ मैं. रिसेंटली बहुत सुना माउंटी के बारे में. He recently released a movie. I don't remember its name. It's like it is a psychological horror movie. I think it is said to be really good. And before this, last year I think he did a movie in which he became a homosexual. I mean, not literally became, it was part of the story. But can you imagine an actor who is playing a homosexual character in his 70s? Can you imagine Amitabh Bachchan playing that kind of character? It needs guts, it needs courage. You need balls to play that kind of character in such age and such industry. I don't think we will see that kind of thing in Bollywood. I don't think हमारे बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर है जिसमें इतना करेज दैट हु कैन प्ले लाइक सच कैरेक्टर in 70s, like yeah, he's in 70s. I don't think Amitabh Bachchan can play such character. हाँ, Katal the Core, that is the name, yeah.
ये अब दोनों की गलतियाँ चली, ये दोनों, ये हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में एक राइटिंग इश्यू है. Audience, most audience, not saying everyone, most audience don't have any problem with homosexual characters, bisexual characters, but the way you portrays them is the reason why they hate them. Not because most people just hate, not because most people are homosexual. It is not the reason. It is the way they are written. Yeah. तो जब तुम वोकनेस की तरफ चल जाते हो ना, like you're building the entire character and their entire story on that particular trait of them. That is the reason why people hate so many of these movies, so many of these characters. You make that the central point of their character, which you should never do. Which you should never do. I think there must be a reason behind that shoe as well, which is fine. If you are, you are. That is something that is to you. If you're not being like, if you're not hurting someone despite your beliefs, that's fine. Who cares? It is your beliefs, right? चीज़ ये आती है, तुम जो तुम्हें सोचना है वो सोच सकते हो, बट तुम्हारी जब सोच से, तुम्हारे एक्शन से किसी अदर पर्सन को बुरा फील हो, दे गेट हर्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल माइंड सेट, बिकॉज यू डिड समथिंग टू हर्ट देम. दैट इज द प्रॉब्लम. इट इज नॉट योर माइंड सेट बट द एक्शन you take regarding that. That is the problem. J.K. Rowling, she is transphobic, right? And she has openly said those things. That is the reason why she gets so much hate. अगर वो होती, अगर उसके अगेंस्ट नहीं कहती, then it's fine. If you hate something, why talk about it so openly? Don't you think you are not like, एक genuine question है. अगर तुम्हें कोई टॉपिक पसंद है जिससे तुम एक टॉपिक जिससे तुम नफरत करते हो, would you like to talk about it? I personally won't. I'm not enjoying talking about it. Why would I talk about it? So that kind of thing. And India mein, I think it is very common, sadly. Most people in India are, I think, homophobic. They are like very phobic regarding other sexualities in general. So I feel bad about it. But मैं क्या सकता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ. आई कैन चेंज समन्स पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दैट. अगर उनका थिंकिंग ये है, दैट्स फाइन. अगर वो अपने पर्सपेक्टिव को किसी कॉन्वर्सेशन में नहीं ला रहे हैं, दे आर नॉट फोर्सिंग इट अपॉन मी, देन इट्स फाइन ना. वो उनकी थिंकिंग है. आई डोंट हेट दैट. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू आर होमोफोबिक. बट if you are homophobic and you're showing it, if you are talking about it to me directly, something I'm not interested in, then that is a problem. You can have your beliefs, just don't put it upon people. Yeah, why would I want to feel negativity regarding something I hate? I don't want to. I don't want to feel negatively. I don't want to think about things I hate. अब आ गई ना, देखो प्यार वाली बात. मैं ओपनली जाके उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट अ होमोफोबिक, बट आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ माई वे टू सपोर्ट दैम. इट्स फाइन. If you're doing something, if you're like happy with that, good for you. Good for you. Just don't force those things on me. Just don't force your beliefs on me, and I'm fine. But I think हम अभी काफ़ी controversial and काफ़ी फायरी टॉपिक पे बात करें. सो लेट्स जस्ट चेंज इट, बिकॉज आई नो अगर मैं बात करने लग गया ना इन चीज़ों के बारे में, और अगर चैट में ऐसे लोग आ गए मेरे जो लाइक पत्थर दिल इंसान है, जो लाइक बहुत ओपन इन जिसके बारे में, आई एम श्योर it will become a shit show. So let's not talk about this thing. I personally don't have any problem with homosexuality, but it is none of my concern. I won't appreciate them. I won't hate them. Exactly. Be neutral about it. किसको फर्क पड़ रहा है? Yeah, exactly, Yoshikage.
if you are neutral, like अगर तुम्हें, if you don't appreciate them, just don't hate them. Be neutral with that. It should not matter to you. That is the right way to do it. ठीक है? If you wanna don't appreciate them, at least just don't hate them for who they are, for what they are, for in what they believe. Just don't do it. Why would you wanna hurt some other person's feeling because of your beliefs? Fuck यार, इतना बात करने के बाद मेरी खांसी it's itching in my throat. 1.5 घंटे की स्ट्रीम हो, उसमें से 1 घंटे तो हमने यहाँ पर बकचोदिया करी बात करते करते. गेम किसको खेलना है? स्ट्रीम चालू कर लो गेम के नाम से, ये सब करते रहो. That is a good thing, Yoshikage. That is the right option in my opinion, personally. No, Shubh, that is not right. You don't have to pick a side. ये कोई life threatening topic नहीं है जिसमें तुम्हें side pick करने की ज़रूरत है. It is not. It is not a life of death situation that, oh shit, I will have to choose something. Nah, it is not. Just be neutral. For example, like people say that politics is important. You should know about politics. यार मेरा मानना ठीक है. I am not interested in politics. So मुझे like current जो political structure है, political condition है इंडिया की और वर्ल्ड की, मुझे पता नहीं क्या है. Because I'm not interested in that. मुझे इतना पता है इस साल का इस बार का इलेक्शन भी मोदी जी जीतेंगे because we don't have opposition in India. मुझे इतना पता है. मैं उसमें अब इस चीज़ में डीप डाउन नहीं जाना चाहता. बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक, स्पेशली पॉलिटिक्स. कभी मुझे मेरे पल्ले पड़ी नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहूँगा. हाउ इज इट अफेक्टिंग यू सोशली? Genuine question, Shubh. Don't think that I'm targeting you, because since like I'm curious about it. How is it like affecting you socially? Devashi is also interested in the question. मैं भी जैन जी हूँ कंटा. जैन जी 2000 पे स्टार्ट हुई थी ना. आई एम 2000 किड. या पॉलिटिक्स एवरीवेयर इज डीप, स्पेशली इन इंडिया. सो लाइक मेरे बस की बात नहीं है चीज़ समझना. आई डोंट ट्राई टू डेल्व इनटू दीज थिंग्स. वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डोंट वोट. मुझे नहीं पता यार, मुझे सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता और मैं समझता हूँ. आई डोंट वोट, दैट्स इट. आई लाइक ट्राई टू बी न्यूट्रल. आई थिंक मेरे पास हाँ अभी तक तो एक ही अपॉर्चुनिटी आई है वोट देने की, बट मैंने नहीं दिया बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. बट यू कैन फोर्स दैट ऑन योर सन ना यार. केतन दैट अगर तुम्हारा बेटा होमोफोब क्या व्हाट आई एम सेइंग. हाँ अगर तुम्हारा बेटा है तो है, कैन यू लाइक डू यू वांट टू चेंज ही, लाइक डू यू वांट टू पनिश हिम फॉर बीइंग दैट इज़ माई क्वेश्चन. क्या तुम चाहोगे तुम अपने बेटे को दुखी रखना उस चीज़ की वजह, लाइक ही इज सेक्सुअलिटी, बट वुड यू लाइक टू चेंज इट? हाँ ये तो मैं मानता हूँ. यार ठीक है, मैंने भी बहुत वेस्टर्न मीडिया कंज्यूम किया एंड ऐसी कई चीज़ें हैं जो वेस्टर्न इंस्पायर्ड है मेरी भी, बट इतना मैं नहीं करता कि मैं इंटरनेट पे जाऊँ इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ. व्हाई हेट इज सो टाइम कंज्यूमिंग. व्हाई वुड यू वांट टू डू सच थिंग? व्हाई वुड यू वांट लाइक गेट इनटू अ थिंग दैट इज सो कंट्रोवर्शियल फॉर नो डैम रीजन? फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट ठीक है, इट्स योर माइंडसेट, बट एक वो होता है ना लाइक तुम इतने ड्रास्टिक एक्शंस ले रहे हो बिकॉज ऑफ दैट थिंग, दैट इज अ बिट टू मच.
And in the end, yeah, honestly, it is their life. You might be the father, you might be the parent, but that doesn't give you the right to curve his life, curve his belief to your own. ठीक है, अगर तुमने बच्चे इसलिए किए हैं that so you can control them, then I don't think you should have kids. They are not puppets, they are living human beings who can think for themselves. Okay. And second, astrology app says I will have 2 kids. तो ध्यान तो हमारा भी नहीं था LGBT की तरफ से यार. वो तो रिसेंटली भी स्टार्ट हुआ मीडिया में, मोस्टली वेस्टर्न मीडिया में, इंडिया मीडिया भी जा रहा है, इंडियन मीडिया भी, बट इट इज़ बिकॉज हाउ दे पोर्ट्रेट. इफ़ दे पोर्ट्रेट प्रॉपरली देन ठीक है, बट अगर तुम उसको मेन टॉपिक बना रहे हो अपने थिंग्स का, दैट इज़ द प्रॉब्लम. यू आर नॉट गुड एट राइटिंग, यू आर जस्ट डूइंग प्रोपागेंडा. Propaganda, that is the right word, thank you. If you're doing propaganda stuff, that is the thing I will try to ignore. I would try not to consume. Propaganda is the biggest reason. For example, मैंने केला स्टोरी देखी नहीं है, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है, it is full of propaganda. This is an important one. She was happy that I will have 2 kids and a good wife. कर दो तो shoot that tap. ठीक है भाई, कर लो. Yes, Sutta bhai, good evening, good morning, good afternoon. एंड वेलकम टू द स्ट्रीम. कुछ नहीं छोटा भाई, आज गेम खेलने का थोड़ा मूड कम था, तो हैविंग सम कॉन्वर्जेशंस, दैट्स इट. और कॉन्वर्जेशन, आई थिंक आई हैव चेंज द टॉपिक अ बिट टू मच, सो लेट्स गेट बैक टू गेमिंग और अबाउट लाइफ. Let's not delve into politics or sexuality. That is a very controversial topic, so let's forget it. Sure, Devashish, appreciate it. Thank you for coming to the stream. I was thinking of playing Yakuza 6, but हाँ, I think you're right. अभी मुझे लगता नहीं ज़्यादा लोग आएंगे because of their exams, so I should probably postpone that and focus on other things. ना मुझे नहीं पता, मैं genuinely कहता हूँ, मैं मुँह पे कहता हूँ, ना मुझे हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता, ना मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पता, ना मुझे जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता. आई एम नॉट, आई विल ट्राई नॉट टू pretend that I know these things. देखी नहीं तो हाउ कैन यू से इट्स फुल ऑफ प्रोपेगेंडा, बिकॉज जिन लोगों को मैं ट्रस्ट करता हूँ, दे हैव टोल्ड मी दैट, एंड मुझे पता है वो बिना किसी रीज़न के झूठ नहीं बोलेंगे. नहीं देवाशीष, तुम्हें पता है आई एम नॉट गोना प्ले क्या वांट मी डू राइट नाउ. आई एम जस्ट गोना प्ले द गेम्स इन रिलीज ऑर्डर डिस्पाइट एनीथिंग. हाँ, तो मैं नहीं खेलना ज़रा यार अभी. आई विल जस्ट वेट फॉर योर एग्जाम्स टू कंप्लीट, एंड पहले वाला वही रखते हैं ऑर्डर. आई विल प्ले इट आफ्टर ड्रैगन्स डॉगमा 2 व्हेनेवर आई गेट टाइम. आई वाज जस्ट फीलिंग अ बिट स्ट्रेंज टुडे, अ बिट not good. That is why I was thinking to play it, because these games have become my comfort gaming, honestly. Actually, I was thinking of playing those games before Yoshikage, but जब मैं खेलने की सोच रहा था ना, उसका ब्लैक पैंथर 1 का क्यूरियो का पैच फर्स्ट गेम का उसमें था डेवलपमेंट में, so that is why I didn't play them. I will play them, that's for sure. I don't know when exactly, but I will, because they are such different games that they won't feel odd whenever I play them. पैसिफिक ड्राइव वही गेम है ना जिसके अंदर लाइक यू हैव अ व्हीकल दैट यू कैन कस्टमाइज रिगार्डिंग योर नीड्स
जहाँ तक मुझे ध्यान है वही गेम है. And it is very like horror-ish game. ये देखो छोटा भाई, आप कोई गेम खेल रहे हो अभी या नहीं? हाँ ये सही है. मतलब आपको डार्क सोल्स 2 नहीं खेलना, आपको एल्डन रिंग खेलना है. बहुत बढ़िया. देख रहा हूँ मैं आपको. और आप तो कोई गेम नहीं खेलने वाले थे ना? ये तो ट्रिक क्वेश्चन था जानने के लिए. क्या फोकस कर रहे हो नहीं कर रहे. जस्ट किडिंग ऑफ कोर्स. प्ले व्हाटएवर यू लाइक. आप तो 1 घंटे में आने वाले थे ना, जल्दी कैसे आ गए? 1 घंटा हो गया. आप तो 1 घंटे में आने वाले थे ना बाबा. Devashi, it's an spin-off Yakuza game which never came out of Japan. Yeah, it never came out of Japan. एक मिनट. देवाशीष को कोरियो के बारे में नहीं पता. I mean, however you pronounce the name of the game. Holiday, okay, yeah, sure. Enjoy the holidays. Hey Plasma, welcome back. I don't do anything related to work or stress. Okay, understood. Bye Shub, thank you for coming to the stream. This game feels so smooth. The arena. The anime has gathered the arena and the Witch King issue a challenge to the Grey Walk. The Orcs' numbers have swelled beyond count. They're preparing for another push. No one has seen your father since the last battle. I have men looking for him. मैंने देखी नहीं, पहले नहीं देखी है. Dune 1 नहीं देखी मैंने आज तक. And Yoshikage, I think Dark Souls 2 is at a great place right now. Like yes, it is a very divisive game, but there are a lot of people who loves that game. What is this? The Witch King himself comes to negotiate. रात में आधा लीटर दूध पीने जा रहा हूँ. विश मी लक. My father's blade. गुड लक केतन. People can have opinion, Plasma. You should start understanding that thing. Don't let others' opinion. Hey, bye Yoshikage. Thank you for coming to the stream. Have a great night. You understand? That the Uruks are incapable of mercy? That my father may already be dead? Ignore their taunts. We mustn't allow them. The Uruks love spectacle. If we can distract them in the arena, we can sneak into their camp and find my father. Can I ask this of you? Give them a show to remember. Try not to kill him too quickly. They seem to like their champion's chances, and it
Must be said, he has. I heard the cutscenes are still pre-rendered. But you and I have him outnumbered. In-engine cutscenes, pre-rendered cutscenes. I much prefer in-game cutscenes because they age well. They shows all the things that were happening in the gameplay itself, and yeah, they are much better honestly. Just look at the in-engine cutscenes of Rockstar games or Capcom games. I don't like pre-rendered cutscenes. अगर हाँ pre-rendered cutscenes तब use करो when the hardware is unable to render everything properly. Otherwise, they should not. Clumsy, vulnerable to stealth, beast fodder, fear of burning, fear of poison, damaged by execution by fire by poison. What? What's wrong with pre-rendered cutscenes? They are just not good. They don't age well. They break immersion between the in-game graphics and the cutscenes. And if you have in-engine cutscenes, you can tweak your game, and things will still appear in the game. For example, different costume and cosmetics that you wear in game, they will appear in pre-rendered. That kind of thing. Pre-rendered cutscenes are much better compared to. In-game cutscenes are much better compared to pre-rendered for many reasons. Cannot be. Not supposed to end like this. I am champion. Fought well. Too well. Idril needs more time. Should I dance for them? Or in a manner of speaking. I came into this arena to fight Sauron's champion. I am still waiting. Your suffering is going to make me Hosh Grish. Clumsy. Fear of burning, fear of pinning, range attacks, damage by execution, fire. Yeah, it has few in-game cutscenes, but mostly just story-based cutscenes, so they are pre-rendered. The last cutscene you just saw, it was in engine. You don't get to kill me today, but we'll see each other again. I promise. Tricky escape. Great. You realise we had to put the whole siege on hold for this? I could be burning down stables and looting great halls, but no. I gotta deal with this pink-skinned ranger. Well, hurry up and die so I can get back to it.
No. I don't know. Must be something. Must be something related to stream. Execution. We don't have any fire around us. Ranged attack. Damage by stealth attacks. Okay. The dialogues are the best part, in my opinion. They're fun. Oh, I hate these guys. Falls to me to do the job of piece of man filth. Difficulty पे depend करता है मैं second hardest difficulty पे खेलूँ. Mortally vulnerable to stealth, can't stealth him. Execution, demoralized, range, beast. Hey Ketan, welcome back. Been a long time, Ranger. Last time I bloodied you was back in Udun, yeah? Well, this seems as good a place as any to end you good and proper. Come on, let's give the crowd a show, eh? Ishmoz. वही तो है, 2 बार इंटरव्यू दिया इसने. What the hell? यहाँ पर हो तुम सारे के सारे. To brawl in front of a cheering crowd? Can't think of a better way to go. He will be back. I have a feeling he will be back. I have upheld my end of the bargain, and your champion has upheld his for fighting this pitiful enemy. The Dark Lord आदत पड़ चुकी है. mercy. Gaze now upon the bright Lord. ड्रैगन इंजन वाले यूज नहीं करते. Make no such Actually, you know what? नहीं. Most Yakuza games don't use the pre-rendered. Most of them are in engine actually. कुछ cutscenes है जो like pre-rendered है. give him this message. But most of them are in engine. Come for him.
वो मोस्ट लाइकली उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से था. दे आर लाइक ऐसे कई कट सीन्स हैं याकुजा 3, 4, 5 में जो इन इंजन है, एंड ऐसे कई जो प्री रेंडर्ड है बिकॉज ऑफ द स्केल मोस्ट लाइकली. बट मोस्ट ऑफ द कट सीन्स इन याकुजा गेम्स आर प्री रेंडर्ड, सॉरी इन इंजन. Let us hope Idril found her father. All that matters is the Palantir. It cannot fall into the Witch King's hands. Either way, I think I had enough for today. It was a good stream. Gonna eat something and go to sleep. कल मुझे editing करनी है and other stuff as well. So either way, guys, thank you for coming to the stream. Appreciate it. Thank you for listening to my bumbling. It was good. I'm in a good mood now. And yeah, appreciate that. You as well, Ketan. Either way, I will take my leave. Good night, everyone. Have some great sleep and great dreams.